Good morning, student. Myself Mahima Seth. Today we will going to solve a program based on selection control statement, that is if condition. Earlier in class 9th also we have studied the three different form of if, that is simple if else and if else ladder. Here I am going to solve a program which is based on if, and after that you have to solve a question which is again based on if condition. So the question is, an electric company has the following rates for its monthly bill. It means you have to calculate the electricity bill of a company on the basis of the rate given by the company. Unit first 300, it means unit between 1 to 300, the amount will be 6 rupees per unit. Next 500 means from 301 to 500, from 301 to 800, the rate will be 7 rupees per unit. Next excess means after 800, the amount will be 8 rupees per unit. So in this program, three conditions are there. The first condition is that the rate, if the unit is between 1 and 300, the amount should be 6 rupees per unit. If it is from 301 to 800, it will be 7 rupees per unit. If it will be after that, it will be 8 rupees per unit. Then how to solve this program? First, we will import a class, that is the scanner class, as we have to input the unit. The first line is import java.util.scanner. Here we are using this Java file to import this scanner function. Now we are opening a class, public class program. हमारे क्लास का नाम क्या है? Program. Opening brace, public static void main string argument. This is the opening method. This is the main method, opening brace. Now we will declare the object for scanner class. Scanner sc is equal to new scanner in bracket system.in. sc is the object name to call the scanner function from the above defined file. Now we have to input unit on the basis of which we will calculate the electricity bill. So integer unit. Why we have taken integer? We have taken integer because the unit must be in numeric form, like 3, 4, 100, like this. It should not be in the decimal form. But the rate which we will calculate, the amount which will be calculated, that will be in the floating point. So for that we have taken double amount. So up till now we have taken two variables. One is the unit in which we will input the unit consumed, and second will be the amount in which we will calculate the amount which is the total electricity bill on the basis of the unit given. System.out.println, enter number of unit consumed. Now this is the message we are giving to the user to enter the number of units consumed by them. Unit is equal to sc.nextInt function. You must be knowing this line very well. You have studied this in class 9th also. Sc is the object name. Dot is the operator which is used to make a combination between the two functions, and nextInt is the function name which is used to input the integer value and to allocate memory with the help of object, that is sc. So अब हम इसे यहाँ पर जो भी unit input होगा, that will be stored in unit variable. Now here we will use the condition. If unit is less than equal to 300, अगर हमारी unit 300 से कम है, then the amount will be calculated like this. Amount is equal to unit into 6 rupees. Here we have written 6.00. Why we have written this? Because we have to calculate the amount in decimal. That's why we have written 6.00.
Now next condition, else if the condition is like that, for extra 500, it means if the unit is less than equal to 800. If the unit is less than equal to 800, amount will be calculated like that. For first 300, the rate will be 6 rupees, but for next 500, the rate would be 700. So what we will do, first we will कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द नेक्स्ट 500. तो वो हम कैसे करेंगे, यूनिट माइनस 300, जितनी भी यूनिट एंटर हुई है उसमें से हम 300 माइनस करेंगे और उसे हम 7 से इनटू कर देंगे. सपोज हमने यूनिट एंटर की 699, तो 699 माइनस 300 कितना हुआ, 399. 399 इंटू 7, तो दिस विल गिव यू फॉर द एक्स्ट्रा यूनिट आफ्टर 300. देन प्लस 300 इंटू 6, 300 तक जितनी यूनिट थी वो 6 रुपीज़ के अकॉर्डिंग ही चार्ज होगी. तो उसके लिए हमने क्या किया, प्लस 300 इंटू 6. नाउ थर्ड कंडीशन, एल्स अगर इनमें से कोई भी कंडीशन जस्टिफाई नहीं होती है, इट मीन्स कि हमारी यूनिट 800 से ज़्यादा है. तो हम क्या करेंगे, अगर हमारी यूनिट 800 से ज़्यादा है तो जितना भी हमारी यूनिट 800 से ज़्यादा है उसका हम 8 रुपीज़ पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे. सो द फॉर्मूला वुड बी अमाउंट इज इक्वल टू यूनिट माइनस 800 इंटू 8. तो पहला सेक्शन हमारा हो गया कि जितना भी हमारा यूनिट 800 से एक्स्ट्रा है वो 8 रुपीज़ के हिसाब से चार्ज होगा, प्लस जितनी यूनिट हमारी 300 और 500 के बीच में है वो 7 रुपीज़ से चार्ज होगी. तो जो 500 है इंटू 7 और जितनी यूनिट हमारी 300 तक है वो 6 रुपीज़ से चार्ज होगी. तो दिस विल बी द टोटल बिल इफ़ द यूनिट कंज्यूम्ड इज़ मोर देन 800. हमने तीनों कंडीशन लगा दी. नाउ वी विल डिस्प्ले द आंसर. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन द नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड, मैसेज आएगा द नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड इज यूनिट. अब जो भी हमने यूनिट एंटर किया था स्टार्टिंग में वही हमारा प्रिंट होकर आएगा. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बिल अमाउंट, बिल अमाउंट मीन्स दैट इज इलेक्ट्रिसिटी बिल अमाउंट जो हमने कैलकुलेट किया है ऑन द बेसिस ऑफ द 3 कंडीशंस. उनमें से जो भी कंडीशन सही होगी उसके हिसाब से हमारा बिल अमाउंट आ जाएगा. क्लोजिंग ब्रेस, ये जो पहला क्लोजिंग ब्रेस है ये एंड ऑफ मेथड है, दूसरा क्लोजिंग ब्रेस है एंड ऑफ क्लास. Okay, so today I have given you only one program. Just read this program, watch this video carefully and practice this program in your system. After that, I will give the output of this program also, and you will also practice this program and display the output in the group. Okay. Now, on the basis of the above program, I have given you one program as a homework. So the homework is, write a program to input age. If age is 18 or above, print you can vote. If age is less than 18, calculate after how many years the person will be allowed to vote and display you can vote after dash year. तो इस प्रोग्राम में 2 कंडीशन है. पहली कंडीशन ये है कि अगर आपकी एज 18 या 18 से ज़्यादा है तो क्या करोगे, आपका मैसेज आएगा दैट यू कैन वोट. ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल एक मैसेज आएगा यू कैन वोट. बट अगर आपकी एज 18 से कम है तो आपकी एज कितनी कम है और कितने सालों बाद आप वोट कर सकते हो ये आप कैलकुलेट करोगे. सपोज आपने लिखा कि हमारी एज 15 है तो 18 माइनस 15 मतलब आफ्टर 3 years यू कैन वोट. तो आंसर आएगा यू कैन वोट आफ्टर 3 years. ओके, थैंक यू क्लास.